सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा हमारे प्यारे सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा है नाविका गुरु की पाल है प्यारे सावन प्यारे का प्यारा कृपा का सागर की पाल है प्यारे अजायब खोजन से भी प्यारा है नाविका गुरु की पाल है प्यारे सावन प्यारे का प्यारा कृपा का सागर कृपा है प्यारे अजायब खोजन से भी प्यारा वह तो है एक मस्तार सलोने वह तो सुंदर सलोने उनका हुआ जिसने देखा हमारे प्यारे सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा हमारे प्यारे सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा वे तो महान है मेरे सतगुरु वे तो महान है मेरे सतगुरु उनसा महान ना और देखा हमारे प्यारे सतगुरु जैसा हमने ना कोई और देखा।
स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में लिखा है, 52 अक्षर लोक त्रय, हाँ सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें नाई। कहने का मतलब 52 अक्षर हिंदी में आते लिपि, 52 अक्षर से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और सप्तकोटि मंत्र तैयार हुआ। Swamiji Maharaj in his Bani has said that everything that is written is contained in the 52 letters. In the Hindi language, there are 52 letters, and all the four Vedas, 6 Shastras, and 18 Puranas, and all the 7 crore mantras, all of these are contained within those 52 uh, letters. But he says that uh, the Naam is not contained within these. जो ये नाम इन अक्षरों में नहीं आता है, वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो आत्मा के कानों से उसका आवाज सुना जाता है, आत्मा की आंखों से उसका प्रकाश देखा जाता है। That Naam is not contained in these 52 letters, and it can only be heard by the ears of the soul and seen by the eyes of the soul. कहते हैं संतों ने वो शब्द को ही नाम कहा है। असली नामदान जब 5 नाम का सुमरन बताते हैं, ये सच्चा नाम नहीं है। ये 5 नाम आपको ये शरीर खाली करके 9 से 10वें में आने के लिए 5 नाम का सुमरन जरूरी है। The masters call that sound current as the Naam. When they say they have given Naam Dan, it is the initiation into that sound current. The 5 names that are given outwardly, the 5 holy names for the repetition, those are only given as a tool to clear these 9 doors of the body and come to the 10th door. क्योंकि ये भी अक्षर है। कबीर साहब कहते हैं जो अक्षर है वो नाश होता है, जो दिसे सो नासे परे आज के काल। जो भी कुछ दिखाई देता है सब नाश होने वाला है। सूरज चांद सितारे, नदियां सागर पर्वत भारे, जो भी दिखता है सब नाश होता है। इसीलिए जो संत नाम देते हैं वो अक्षरों से अतीत है और वो बोला भी नहीं जा सकता। The 5 holy names, they are also contained within the 52 letters, and those are also subject to destruction. Anything that we can see, talk, or hear, that is all subject to destruction. The sea, the mountains, and the land, and everything that we see around us, everything is subject to eventual destruction. So the Naam that the masters give us, that is not subject to destruction. वो नाम जो सतलोक सचखंड से आके 10वें दरवाजे में 24 घंटे धुनकार दे रहा है, वो शब्द, उसी शब्द को संत नाम कहते हैं। That holy sound current, which is emanating from God Almighty, and it comes from Sachkhand and is resonating at the eye center. The masters connect us to that, and that is what the masters call as Naam. तो कहते हैं कि जब 5 नाम के सुमरन में संत बिठाते हैं तो अंदर हमारी आत्मा भी है, शब्द भी है, दोनों का कनेक्शन नहीं है। तो संत अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और वही नाम दान होता है। When even today, the soul and the holy sound current are both contained within for all beings. But at the time of initiation, the master connects the soul with that holy sound current, and that is what is called as Namdan. तो कहते हैं अगर कनेक्शन नहीं तो हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। वो कनेक्शन के जरिए ही हमारी हर समय रक्षा होते रहती है। तो इसीलिए नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संत हमें देते हैं। It is only because of that connection of the soul with the holy sound current that the soul is protected. And
the sound current is of a very high order, and it protects the soul all the way back to God Almighty. That is why the masters connect us to the holy sound current. तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान, क्योंकि हम जड़ शरीर में हैं और जड़ को काटने के लिए जड़ की जरूरत है। इसलिए 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान बताया जाता है, जिससे मन को, हम चुपचाप रहते हैं, हमारा मन चुपचाप नहीं रहता, वो कोई न कोई सुमरन से जुड़ा होता है, दुनियावी सुमरन से। तो महात्मा कहते हैं कि दुनियावी सुमरन के जगह पे नाम का सुमरन करो। The masters give us the five holy names for repetition, and they ask us to contemplate on the form of the master as we see them. And this is done so that we are able to go within and open the 10th door. Whatever is physical, we need tools which are in this physical world to overcome uh, those obstacles. And that is why these names and the contemplation is of the physical kind, and that helps us to go within. जिसको हमने परसों भी कहा था, गुरु नानक ने वही बात कही है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वो परमात्मा के अंदर से वो शब्द ही नीचे उतरा, और वो शब्द ने ही परमात्मा के हुक्म से सारी दुनिया का रचना किया। Like I had said earlier, Guru Nanak Sahib has said that it is that holy sound current only which has come from God Almighty, and under the instructions of God Almighty, it has created all the planes and it has made the whole creation. This oceans that we see, the land, this earth, and the entire universe, everything has been created by this holy sound current. And that holy sound current resonates in all the living beings, and it is resonating at the eye center. तो इसीलिए कहते हैं कि सुमरन ध्यान करके अपने ख्याल को ये 9 दरवाजे से निकाल के 10वें तक आना। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमारी जबान बंद हो जाती है, बुद्धि लय हो जाती है, तो हम कहाँ सुमरन करेंगे। तो उस समय गुरु जो शब्द से कनेक्शन देता है वो शब्द प्रकट होता है। When we lovingly repeat the five names and we contemplate on the form of the master, we leave the ninth doors and we come to the 10th door. When we come to the 10th door, the our intellect ceases, and so does our faculty of the tongue. So we are neither able to repeat or use our intellect. So when there is no intellect and no tongue to repeat, there is no question of repeating those five names. So after that point, it is only the holy sound current, which is with which the soul is connected, which takes us up. तो कहते हैं अंदर में तो सब वो लाइट भी प्रकट हो जाता है गुरु के कृपा से, शब्द भी प्रकट हो जाता है, और ये दोनों आधार पे ही हमारी रूह ऊपर चढ़ाई करती है। So there, with the grace of the master, he manifests the holy sound current and the light. And then only on the support of this light and this holy sound current, the soul ascends upwards. तो इसीलिए चाहिए कि हमें भी इस 9 दरवाजे से 10वें में आने के लिए सुमरन ध्यान की जरूरत है। सुमरन ध्यान ज्यादा से ज्यादा टाइम करें और 9 से 10वें में आवें, अपने आप को पहचानें। So it is important for us to do our meditation, to do our Simran of the five holy names and do the contemplation of the Master. And the more we do it, the faster we will progress within. So it is incumbent on us to do more and more of this practice and come as early as possible at the 10th door. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है। शांत मन ही भजन के लायक होता है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। आंख बंद करके सुमरन ध्यान से जुड़े।
The morning time is very good because the mind is very quiet, and a quiet mind is good for meditation. So let us make the most of it, and we close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.